हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ विशाल और आज मैं आपसे उन 4 मेथड्स और उन 4 मोड्स के बारे में बात करूंगा जिससे आपको सिंगापुर में जॉब्स बहुत ही आसानी से मिल सकती हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप प्लीज़ जाके देखिए। उसमें मैंने आपको 5 ऐसे कंट्रीज़ के बारे में बताया है जहाँ पे आप क्विकली इंडिया से माइग्रेट हो सकते हैं, ईज़िली माइग्रेट हो सकते हैं और बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं आपको इफ़ यू वांट टू लुक फॉर जॉब्स आउटसाइड इंडिया। तो ये मैं वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि जब मैं इंडिया में बेस्ड था आई वाज इजीली एबल टू फाइंड द जॉब by using these methods from India to Singapore. And I want you guys to capitalize on that opportunity while you're based in India, how to find the jobs in Singapore. Although मैं ऑस्ट्रेलिया सिडनी में बेस्ड हूँ अभी और फ्यूचर में मैं हाउ टू फाइंड जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड हाउ टू मूव हेयर एंड थिंग्स लाइक दैट उसके बारे में भी वीडियोस बनाऊंगा। बट आज इस शुरुआत करते हैं हम सिंगापुर में जॉब्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो while I talk about the 4 methods, I will also talk about 2 pro tips towards the end जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपको इजीली जॉब फाइंड आउट करने में और उसको कैपिटलाइज करने में। सो डू नॉट scroll through the video. Please watch in detail and keep watching till end. So let's quickly jump onto the screen where I'm going to show you 4 different ways in which you can find the job easily. So guys, let's look at some of the websites जहाँ पे सबसे ज़्यादा सिंगापुर के जॉब्स एडवर्टाइज होते हैं और जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं अपने प्रोफाइल के जॉब्स और अप्लाई भी कर सकते हैं। सो लेट्स क्विकली जंप ऑन टू द लुकिंग एट द वेबसाइट्स। तो ये पहली वेबसाइट जो मैंने खोली हुई है, इट्स कॉल्ड efinancialcareer.sg। इन अगर आप गूगल पे फाइंड आउट कर रहे हैं ऐसे तो प्लीज़ मेक श्योर दिस इज़ द वन दैट यू चूजिंग www.efinancialcareer.sg because there might be different domains as well. So once you click on it, it takes you inside the website. So now here you can see that there are so many jobs that are advertised, right? I mean, we look at domain lead digital technologies, business development manager, AML compliance specialist, ID audit manager, some jobs related to DBS, and there will be tons more that will be keep uploading. So let's quickly look at one of the examples, right? Quickly look at what has been advertised. For example, अगर आप देख रहे हैं VP Portfolio Advisor Private Banking Consumer Banking Group, which is advertised by DBS, which is one of the biggest banks in Singapore, और इस बैंक में मेरा अकाउंट भी था। So it talks about, what is the profile, what are the responsibilities, requirements, apply now. So technically what you can do is apply now. So basically once you have created your login and registered yourself, you can apply with your resume. So one of the questions that I get asked a lot is कि उस resume में मेरा मेरा इंडिया का नंबर है, तो is that okay? It's absolutely fine guys, because सिंगापुर एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्किल्स की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, and they're always looking for skilled people. So they're always looking to get people from outside if they're not able to find people within Singapore. Lot of companies, most of the companies, what they do is they advertise, their requirements or their jobs in these portals, and they continue to look for people internally as well as outside. So let's take a look at some other example. For example, it says service delivery manager, category 1, 2 years contract. So wherever it says 2 year contract, it means that it's a contractual job, which means that कि आपको ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब आपका अगर 1 जनवरी 2023 को स्टार्ट हो रहा है तो एंड ऑफ इन 2 इयर्स एंड हो जाएगा। बेसिकली विच मीन्स इज कि आपकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको 2 साल के बियॉन्ड ये जॉब रहेगी। बट अगेन इट्स अ गुड स्टार्ट, राइट? एंड वी कैन कंटिन्यू टू टॉक अबाउट दैट टू अंडरस्टैंड कि कॉन्ट्रैक्चुअल लेना चाहिए कि परमानेंट जॉब्स लेनी चाहिए। आई वुड सजेस्ट अगर आपको कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स मिल रही है, अगर आपकी कोई लाइबिलिटीज है नहीं, और अगर आप you want to move to Singapore and be in that market, might as well take a contractual job. It's no harm. Contractual jobs में sometimes pay थोड़ी ज़्यादा मिलती है, permanent में कम मिलती है, but that is something for you to find out while applying the job and interviewing. So it again talks about the same, some of the job responsibilities, and it gives you an option to apply now as well. Let's look at, if you want to search for some specific roles. For example, let's say I want to search for project management roles, right? So I will type project management and then Singapore likha hua hai, then I will search. So what it takes me to bunch of options that are there. For example, let's look at specialist program and project manager by BNY Mellon.
right? So again, the same thing, what we do, who we are, a successful candidate will be this. These are the requirements that they're looking in a candidate. You go and look what role you have had in the past. Does it suit you? Do you carry this kind of experience and easily go and apply? One of the tip I would give you here is अगर आप कोई स्पेशलिस्ट जॉब देखते हो जो जिससे आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे रोल में फिट हो रही है या फिर मेरे कैटेगरी में फिट हो रही है, you know, you might be working in the same company. Go and talk to the people who are doing the same role. So you might get an idea of, what is required, in this role, what could be the questions asked. So that is something which I have always done in the past. Let's look at one more example. Lead program manager. It says, let's look at this. Senior project manager, banking ops and support. So this is advertised by New Tone Consulting. And here it's also advertised, posted by this person. He's the director. And it talks about the roles and responsibility. Ideal candidate is with so much of experience, and you can go easily and apply. So this is one of the websites, right? There is another website. Let's quickly look at another website. So it's called Indeed Singapore. ये एक और वेबसाइट है. Just make sure, guys, you go on SG, Indeed.sg or sg.indeed. Otherwise, you can go on a different domain as well. ये एक और वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारी जॉब पोस्ट होती हैं. सो ई फाइनेंशियल करियर्स के बारे में हमने बात कर लिया. नाउ वी आर लुकिंग एट इंडीड. सो लेट्स लुक एट इंडीड. सो डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट, राइट? लेट्स लुक एट दिस. सो आप यहाँ पे इन्होंने रेंज भी एडवर्टाइज करी हुई है. स्टूडेंट जॉब +3 समथिंग लिखा हुआ है. So let's look at the job description है, responsibilities हैं, requirements हैं, and maybe talks about the salaries as well. ये salary जो advertise करी है मेरे ख्याल से थोड़ी कम है. I think this is for fresh graduate student job, so depends on if you might want to considering this job. But let's look at something which is more of an experience job. So digital marketing executive, right? So it seems like a part-time job. So इसमें part-time jobs भी advertise होती हैं. And let's look at this job, for example, project delivery manager, IT applications. It is from JJ Consulting Services. So it talks about the responsibilities, what all description you have, team manage करना है, business development करना है, the requirements क्या हैं, इतना minimum experience चाहिए है, and able to travel है as required. So it's important to look at what are the requirements of the job and then only apply. सैलरी का एक रेंज दिया हुआ है. दिस इज अ वेरी गुड सैलरी रेंज. सो शेड्यूल दिया हुआ है एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर 1 year प्रेफर्ड. Digital marketing executive, right? If you're into digital marketing space, so guys, tons of opportunities are there across the board, across the fields, and across the sectors. I would say FMCG, banking, consulting, digital marketing. If you're into development, if you're into non-tech as well. So ये आपके ऊपर है. आप क्या प्रोफाइल ढूंढना चाहते हो, कैसी जॉब ढूंढना चाहते हो. These are the websites you can continue to look at. Let's look at the third website. There is a website called Monster Singapore. So Monster भी बहुत famous है. And when you go and look at the Monster Singapore, this is how it looks like. When you open this website, this is what it comes. I think it's now called Founded, formerly known as Monster. So if you want to quickly, let's take a quick example of project management, right? So I will type project management in jobs. I would choose Singapore as a location, and I will leave experience like that and search. हर वेबसाइट्स में आई वुड रेकमेंड कि आप लॉग इन करें, अपना प्रोफाइल बनाएं. इट्स इजियर फॉर यू टू कंटिन्यू टू अप्लाई फॉर जॉब्स. So let's look at one example here, right? Urgent project management officer, not this. Let's look at associate director project management, NCS, right? It's, I think, one of the companies I'm pretty aware of. So it talks about for a challenge. It talks about the requirements basically, project delivery. उसमें आपको कस्टमर वैंडम मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस चाहिए, बीडी का डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस चाहिए, टीम मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस चाहिए, and it's a permanent role and you can easily apply for this role. So this is the method, guys, in which you know capitalizing these three websites, you can easily apply for roles. And trust me when I say this, आपको बहुत आसानी से जॉब मिल सकती है if you fit in the profile, if you are the right candidate,
and if they are looking for you, then these websites are the main major websites in which all the jobs are basically advertised in Singapore. When I found the job, I was able to find it through e-financial careers. So मैंने अपनी profile upload करी. For months, I continued to look at it, but finally, one day I got a call in which my experience matched, and that person organized my employment pass, and through which within a month's time I was actually in Singapore. So now I will talk about the second mode through which you can find the jobs easily in Singapore. So let's move on to that. So guys, we looked at the websites through which you can find the jobs very easily. Please do apply through those websites. I'm sure you will find it. Second mode that I want to talk about is second mode, the most famous, LinkedIn, guys. Yes, LinkedIn is such an amazing tool to find jobs while you are not only in Singapore, while you're looking anywhere. So LinkedIn में कैसे jobs find out करें? So if you're looking for a specific company, for example, let's pick AWS, Google, Datacom, HCL, Dell, there are a bunch of companies, right? So अगर आप किसी भी company के लिए specifically job find out करना चाहते हैं, go and connect with people on LinkedIn. Go and look for the recruiters on LinkedIn for that particular company. Go and connect with the specific roles that जो आप जिस रोल में हैं उसी रोल में कोई लोग हैं वहां पे दूसरी कंट्रीज में उनसे कनेक्ट करें, उनसे आप बात करें. लिंक्डइन में इतनी जॉब्स एडवर्टाइज होती हैं, उनमें आप अप्लाई करें. You never know, something might just pop up for you, and you might get lucky and finding a job in a different country. So LinkedIn is such a strong tool. I would encourage you guys to make your LinkedIn profile if you don't have one. Update your LinkedIn profile, talk about the roles that you have had, put in a little bit of description, and then connect with people. Guys, I've had experiences in the past that I have found jobs through LinkedIn. उसमें advertise हुआ और मैंने apply किया. I connected to the recruiter through LinkedIn. And then it's just so much easier to find jobs through LinkedIn. अगर आप इन websites के through नहीं find out कर पा रहे हैं तो LinkedIn के through find out कर लीजिए. So let's quickly look at mode number three. So mode number three is internal job boards. Yes, internal job posts in the company that you're working. Guys, I can tell you something. मैंने अपने friends को देखा है. Personally, मैंने internal jobs apply करी हैं, and I've known not only friends who have found jobs from India to Singapore, but I know friends from Dubai to Australia, India to Hong Kong, Singapore to Hong Kong, India to Malaysia, India to Dubai, India to Oman, India to even South Africa. There are so many places people have applied internal job posts and they have found a job. So इसको कैसे करें? Let's quickly talk about that. आपके कंपनी में इंटरनल जॉब बोर्ड या जॉब पोस्ट होती होंगी, कहीं एक पोर्टल होगा. मोस्टली आई थिंक वर्कडे में होती हैं आजकल, या फिर दे कुड बी समथिंग एल्स. गो एंड लुक फॉर दैट. Go and filter it with the country name and go and apply, because lot of companies sometimes are looking for people who are in the same company. For example, AWS, Google, Amazon, and Microsoft. These are the big companies that are always looking for people who can actually move within the company, irrespective of whichever country you are. I know Google has this, amazing feature कि आप rotate कर सकते हैं अपनी jobs throughout the globe. So 18 months you can be in Europe, 18 months you can be in America, 18 months you can be in Asia Pacific. I've known a Sri Lankan guy who did this. I know an Indian girl who is based in US right now who did this too. So बहुत सारी opportunities are guys. Internal job post is one of the amazing mode that you can do that. कनेक्ट करें, आप अपने रिक्रूटर से कनेक्ट करें, आप अपनी कंपनी के रिक्रूटर से बात करें और आप कंटिन्यू करें जॉब अप्लाई करना. Because I think it's really important to continue to look for different methods and different means through which you can continue to apply jobs. Um, Fourth method मैं आपसे बात करूंगा. Guys, it's very important, the method that I'm going to talk about. It's called networking. So when I say about networking, you should network with people. So networking can start with the people that you're working with.
that the company you're working with, the business unit that you're working with, the other stakeholders that you're working with, the broader stakeholders, the senior management, the people you're working with onshore and offshore, the people that are based in different countries. It could be anywhere, guys. नेटवर्किंग इज द की। आज के ज़माने में, आज के दिनों में नेटवर्किंग से ही आपको जॉब्स मिलती हैं। आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि आप अगर अपनी कोई आप वेबसाइट पे जाते हो और आप जॉब प्रोफाइल देखते हो और अप्लाई करते हो, उससे नहीं मिलेगी, बट नेटवर्क से बहुत बार जॉब्स मिलती है। आई हैव हैड पर्सनली, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई मूव फ्रॉम अ कंट्री टू डिफरेंट कंट्री, मुझे नेटवर्किंग के थ्रू जॉब मिली। आई हैव नोन माय फ्रेंड्स जिनकी फॉर सम रीजन किसी कंपनी में जॉब चली गई, नाउ दे फाइंड अ जॉब इन अ डिफरेंट कंपनी थ्रू नेटवर्किंग। सो आप नेटवर्क क्रिएट करिए गाइस। एंड नेटवर्क क्रिएट करने के आपको मैंने एक तरीका बता दिया है। जो आप एग्जिस्टिंग कंपनी में हो उन लोगों से नेटवर्क करें। दूसरा तरीका ये है, आप लिंक्डइन पे जाके यू कनेक्ट विद द पीपल दैट यू थिंक दैट कुड बी समथिंग यू रिलेट टू द फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज दैट यू माइट वांट टू लुक फॉर। आप रिक्रूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। आप नेटवर्किंग डजंट ओनली मीन दैट कि आप कनेक्ट कर रहे हैं। यू कैन हैव अ क्विक चैट। You can send a message saying that, hey, I'm very interested in working in your company and I found this role. Can I have a quick chat with you? That's fine. I'm sure people like to respond to such messages, and people do appreciate people reaching out to them. And last but not the least, networking does not only mean that कि आप ऑनलाइन नेटवर्क कर रहे हैं, आप ऑफलाइन भी नेटवर्क कर सकते हैं। इफ यू मीट समवन by while sharing a cab, if you meet someone while just traveling, if you meet someone in a coffee shop, or you meet someone in a cafeteria of your office also, आप ऑफलाइन भी नेटवर्क कर सकते हैं। So it's really important you continue to network and keep looking for opportunities for different roles that you want to take and different jobs that you want to apply for. So right, so these are the four methods that I think you should utilize and capitalize. Now coming on to the two pro tips. So pro tip ये है कि आप एक तो लिंक्डइन पे जब आप किसी को मैसेज भेजें तो आप एक नोट ऐड करें एट दिस टाइम व्हेन यू कनेक्टिंग। सो जब आप ऐड कनेक्ट करते हैं, कनेक्शन को ऐड करते हैं, देयर इज अ मेंशन ऑफ अ नोट। You do mention a note, why are you connecting with that person? So if you are connecting with a recruiter, so you should say that, hi, so let's pick an example. Hi, Amit. Hi, Amit, I would like to connect with you to talk about future opportunities with XYZ company. Hi, Amit, as per your advertised role, I would like to connect with you to have a quick chat for. तो आप ऐसे नोट लिखें, इससे सामने वाले को ये पता चलता है कि आप उससे कनेक्ट क्यों करना चाह रहे हैं, और इससे ये भी पता चलता है कि आप यू आर स्टैंडिंग आउट ऑफ द पीपल बिकॉज ही माइट बी रिसीविंग सो मेनी लिंक्डइन मैसेजेस और कनेक्ट रिक्वेस्ट एवरी डे। तो आप स्टैंड आउट करते हो। तो ये बहुत बड़ा प्रो टिप है। Second pro tip, and it's a very important pro tip, and I have used it myself, and it has worked very well. So I gave a recent interview with AWS, Amazon Web Services, in Australia, and मैंने एक उसमें role apply किया था, for which what I did was I connected with the person who is working in a same role who is based in Australia. So I found that person, like I looked for people who are working in the same role within the same country, or actually connected with different countries too in the same role. But I spoke to that person who's based in Australia only. So the reason why I did that was, ये आपको हेल्प करेगा एक तो ये पता करने में कि वो जॉब के डिमांड्स क्या हैं, right? What is the expectation of that role? What you can expect to be asked in interviews? How challenging is that job? आपको क्या टाइम जोन्स में काम करना है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या आपके लिए जॉब सूटेबल है, व्हाट इज द करियर ग्रोथ, what kind of opportunities you can gain by getting into that role. तो आप उन लोगों को ढूंढें जिन सेम रोल्स में, उसी कंपनी में जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, लिंक्डइन में ढूंढें, उनसे कनेक्ट करें और उनसे बात करें. You can leave a message by connecting with them saying that, hey guys, I'm applying for a similar role that you are in, and I would like to connect with you to have a quick chat. People will accept your invitation and people will reply to you and they are happy to have a quick chat. अगर आप मेरी कंपनी में अप्लाई करते हैं
और अगर आप मेरे को रीच आउट करते हैं तो विशाल दैट आई एम अप्लाइंग फॉर अ सिमिलर रोल दैट यू आर इनटू एंड आई वुड लाइक टू हैव अ क्विक चैट रिगार्डिंग टू अंडरस्टैंड कि रोल कैसा है, कंपनी कैसी है, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू डू दैट फॉर द सेम, जस्ट टू मेक श्योर दैट कि आपको मैं हेल्प कर सकूं. So guys, this is my second pro tip. Please use these tips and these four methods to apply jobs. अगर आप सिंगापुर में कर रहे हैं तो सिंगापुर, नहीं तो अगर आप किसी और कंट्री में कर रहे हैं, you can use the same methods as well. And with that saying, I really hope that this video has helped you to, get sort of some idea on how you can utilize methods. And I really hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इससे कुछ आपको फायदा हो, आपको सिंगापुर में जॉब्स मिल जाएं और आप या फिर आप कहीं और ढूंढ रहे हैं तो आपको वहां भी मिल जाएं. And I want to connect with all my viewers and subscribers. So please do like, share and subscribe क्योंकि फ्यूचर में मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा जिससे आपको बहुत सारी नॉलेज गेन होने वाली है. एंड डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि आपको और कैसे वीडियोस चाहिए, किस सब्जेक्ट के बारे में चाहिए, एंड आई विल मेक श्योर दैट आई पुल आउट सम टाइम एंड मेक द वीडियोस ऑन दैट. So thank you so much for now. Thank you for watching the video. Do check out my other videos wherein I am talking about my vlogs because I love cricket. I love to play guitar. So if you get time, do watch some of my videos. I'll keep uploading some more contents. So adios for now, and thank you so much for watching. Talk to you in the next video. Bye.